GDP, GNP. One looks at the size. A country may be small, it may be having a good GNP and GDP, or like we saw Singapore, country may be very big, but nothing is being produced by civilian. Then GDP growth rate is a very, very important indicator for a wide to check whether the economy is vibrant, economically they're doing well or not. Growth, what is it? When we say that the growth rate is 5.8% or 3.4%, and in China it used to be 9 to 10%. Now when you talk of the growth rate of China, a country like China, and when you say it is 9 or 8 or 9 or 10%, the value is 10%. So today if it is 7 or 8%, the volume, the size of that economy, 10% of that is equal to some of the bigger countries put together. Itna volume will grow. So 10% of China and 10% of maybe Pakistan or something will both bada fark. होंगे दोनों 10%. So ये भी देखिएगा. Then in the economy you have to also look at the sectors that are involved: agriculture sector, transport sector, social sector, energy sector, manufacturing sector, banking sector. Then you go down. See, how are they growing? Are they improving? Are they not? What is the reason? So when you combine all the growth of all the sectors, then you get the sort of aggregate growth, and that is what is then reflected. And ये सारा Bureau of Statistics में ये data आता रहता है. Then important indicator, as we already said, per capita income. What is one person sort of contribution in that economy? And in that day we saw there is a thing known as PPP, purchase power parity. For example, a country like Pakistan, our per capita income in nominal terms, when you divide the GDP by the number of people to 20 million, it is very low. Population अगर अच्छी होती है and control होता, our GDP would have been better. But when it comes to purchase power parity, we are better off. That means the economy is not that bad. There are things available at a certain price. So उसमें we are. That is why when people come here, they think that Pakistan is a very cheap country to sort of have food, good food, to have excursions, to have sort of recreations. So इसलिए then the budget outlay. How much is the budget of the country? Total budget outlay कितना है? How many trillion of rupees? But mind you, when you talk of this outlay, there is a thing known as actual terms, rupee terms, and there is a thing known as real terms. So in real terms, you have to compare it with the other economies, and that generally the dollar is taken as a good comparison. So इसको dollar में डाल के, then have a look here, where are we now? Otherwise, because of certain issues with inflation and with the value of the currency, the thing looks very good in billions. I went to Iran to purchase करने के लिए. I had to pay for a small thing. आप मानेंगे नहीं, लाखों में millions में कितना वो देते हैं रियाल दो. बहुत बुरा हाल तो मना भी तो अच्छा है तो. नहीं सर 45,000 के कहते हैं रियाल का $1 है. अभी भी ऐसे ही. I thought maybe it is. That's right. Revenue expectation में जो अभी last year हमारा 8.4 trillion budget था, इसमें ये था कि 3,500 जो था वो हमने इसमें देना था. इससे अलावा यानी हमारा सूद में देना था, अगर किसी वजह से वो भी बजट आउटले ये गवर्नमेंट का बजट है, फिस्कल बजट जिसको कहते हैं ना, जिसका एक एक्सपेंडिचर साइड होता है, एक रेवेन्यू साइड है. रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है. वही मैं कह रहा हूँ कि in the budget, when I talk of budget outlay, it is the budget that the government has given you, that this is what we are going to spend this year, and this is how the money is going to come. From where it is going to come, that's a separate. Or it will come from tax, it will come from loans, it can come from any other source. Internal borrowing, external borrowing, ये चीजें हैं. But again,
when you talk of loans, when you talk of debts, there's nothing wrong. जहन से निकाल लें, ये politically ठीक है कि जी कर्जा ले दिया तबाही कर दी. The problem comes when you are, this is known as the burden of debt. When you take loans and you don't utilize them in a productive manner, then the country, the people have to pay for it. There's somebody out there, if you have a driver, for example, or you have a servant, or maybe you have somebody, your neighbor, he comes to you, maybe you're a well-off man, so he asks for some kind of a loan. You're going to first assess his productivity. He says, I want to buy a taxi. I've got 3-4 children, sir, if you give me this money, I'll return it. This is the thing I kind of return I'll give you, but I'm going to run a taxi. And you looking at him, you think, yes, he's a good driver, he's a good man, and you trust him, and so you'll give him that loan. But if you think that he's not trustworthy, he's going to sort of misuse that money. So it is the same internationally. Even countries will not give it. And somehow our history is not very, very good. But there are still, we have good credence of IMF loans and China and countries like that. They would be more than willing to give it to you, provided you use it. Once you don't use it, then it becomes a burden, complete burden, and this is the burden of debt. So ये कर्जा लेना कोई मसला नहीं है. Every country takes it. Then development budget. Budget is okay. ये क्या है? Yeah, this is the budget which the government keeps aside for investing in projects which will come out, their productivity will come out in the future. इसको PSDP कहते हैं, Public Sector Development Programs. So this, it is not part of that budget thing. So normally countries, they intervene. In some countries, maybe the private sector is not very strong, so the government has to come in and go for these things. Otherwise also, for infrastructure projects, the government has to have a development budget. Then, as you all mentioned, debts. The government borrows from the banks internally, and it borrows from other countries also. Why does it have to do that? So as to go for development budgets and go for sort of balancing of that budget. So nothing wrong unless the burden of debt comes in. Then we have this debt to GDP ratio. This is a good indicator. The countries which, for example, you go to a country and you want some loan for, they also have a look at this. Okay, what is your debt to GDP ratio? Ours is enormous. So they immediately know that your debt to GDP ratio is too high. That means you're not paying your debts back. है काफी है. और हमारी 86 से नहीं, I know बाकी countries है, but they have that credibility behind it. Credibility का issue है ना. हमारा 30% बहुत हाँ, 35% हो. But it should have been down. जो आपने दिया है उसको return करना चाहिए. And how do you return it? You return it by bringing in good, productive, feasible, financially feasible, economically feasible projects. पर हम लोन वापस करने के लिए और लोन लेते हैं. To repay this, we are getting more loans so that we can pay that. So countries know that you have to share everything with them. इसमें छुपाने की चीजें नहीं होती. What is circular debt? Is some you also mentioned. आप सारे तगड़े हैं. Oh, circular debt. क्या आपने कहा? हाँ सर, सर्कुलर डेट ये होता है कि आप जो आप एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जो है ये अपनी आपसे तो एक तय कर लेते हैं हमने इतने पैसे लेने हैं, ठीक है. उतनी एनर्जी जो हमारी को कंजप्ट नहीं होती या जरूरत नहीं है, तो लेकिन हमें उनको पे करना पड़ता है. ये एक्चुअली ये PSC है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. In-cut circular debt which the government, they are not functioning properly. जो इनके revenues हैं, they don't match their expenditures. They have to pay somebody else. That debt has gone up now to about 2.2 or 2.3 trillion rupees.
I remember it used to be 400-500 billion. 400-500 billion से it has gone to 2300 billion. फिर कौन देगा? अच्छा या तो it's okay, ठीक है. But then if you have the capacity to pay, let it go. But the problem is that we don't have that capacity to pay. So this is a sort of a thorn in the government, frankly. I don't know how they're going to deal with it. Now these private sector enterprises, जो के part of this, the public sector, if they don't get that money back, they बंद हो जाएंगे. Oil refineries जो है, if you don't pay them that amount, they will not produce. आप produce किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं मिलते. So issues हैं इसके. Then budget deficit जो होता है, वो हमें मुझे budget में डालना चाहिए ना. Normally it is said that it should be less than 4%. It is allowed. Ours has gone up to 8 or 9%. 6.5. इस बार होगा 6.5%. 6.5. ज़्यादा I think ज़्यादा होगा. अब ये set government set down maybe जो सही figures आएंगे ना. Let us wait for that. Maybe in a week's time you'll have the proper figures. Current account deficit, trade, imports, exports. आपकी imports ज़्यादा है, exports कम है. वो जो fill करना होता है, that is an issue with the government. Now ये जो जितनी, let me go through the list, but then each one of them is affecting the other one in some way. तो ये बड़ा एक complex किस्म का issue होता है for economists to balance everything. You do one thing, something else goes bad. You try to screw something here, so I'm going to fix this, something else goes bad. For giving that 2.3 trillion rupees to clear your circle of debts, a lot of things have to change. इनमें अगर ऊपर नीचे jump शुरू हो गया. Tax collection. One has to depend on taxes, of course. So यहाँ पे our problem is that the tax to GDP ratio is not very good. 7.1. 7. What's the सारे figure here? 7-8%. मोटी बात ये तो 7.1. ये इंजीनियर वाली बात है. 7.1342. Good. But अच्छा है, good. So, as I said, in some countries it is 30, 35, 40%. हमारे we don't have that capacity to pay. तो ये मसला है. So when this your revenue generation tax के through is not there, then you look for other revenues. But when you go to other revenues, they tell you why don't you jack up your own? You've got a good economy. When they come here, they see things moving. So they want you to document your own economy, करो pressure. World Bank, IMF, they keep telling you ऐसे करो, ऐसे करो. Foreign exchange reserve. $17 million. This is also a good indicator. 17 million. 22. केरला स्टेट ओन के वो कल स्टेट बैंक ने वैसे इशू किया कि 17 बिलियन है. 17 बिलियन. 17 केरला स्टेट बैंक के पास है. इंडिया का 600 बिलियन. 650 बिलियन. पर आप बताओ जब वो when they go to Russia and they sort of deal with them, those people will be looking at India in a different way, at us in a different way, at Singapore in a different way. So ये चीज़ है. China का billions में. Remittances is a good indicator. Why? For a country like Pakistan, we are heavily dependent on this. Other countries are not. इतना नहीं. बाकी कल की सूचना है यूएई वाले पे बंदे निकाल दे हमारे $100 तो बड़ा हाल हो जाएगा. अदर हाल है. वैसे ये कभी frankly this kind of thing that हमारे बंदे निकाल दें ये होता नहीं है. लेकिन somehow पिछली ये उसने एक सऊदी अरेबिया ने किया था. धमकी दी थी ना सर कि अच्छा नहीं है. It's not good that it doesn't. The world economies don't function that way. और वो भी हमारे भाई हैं. जापानी किस्म के लोग हैं. मर्जी है अपनी. ठीक है. So foreign direct investment or foreign investment. This is also another good indicator.
that means if there is foreign direct investment is growing, that means people have faith in your economy and investment के लिए आ रहे हैं, आपका growth rate बढ़ेगा. Kindly explain about remittance. जी? Remittance is coming. Remittances ये जो बाहर से your people have gone out, they're in the Middle East, they're in Europe, they're in America, in different places. So they're earning a lot of money there. Why? Because these are economically good countries. So that when they send money back to their families, or they send it back in the form of something for investments, उसको remittances है. रिजर्व रुपए हमारे पास वो इसमें शामिल हो जाए. सर जो फ्रीलांसिंग के थ्रू डॉलर आ रहा है उसको भी रेमिटेंस में हाँ. फ्रीलांसिंग के थ्रू जो डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट है. फ्रीलांसिंग का क्या मतलब? सर जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं ना बैठ वो के इसमें आता है? रेमिटेंस. हाँ, जब ऑनलाइन है वो आता है, हुंडी के वाला नहीं आता, इंडिकेटर नहीं. सर्विसेज एक्सपोर्ट में आता है. जी? एक बोला गुड्स एक्सपोर्ट, एक बोला सर्विसेज एक्सपोर्ट. हाँ. वो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट में आता है. फ्रीलांसिंग का. फ्रेंकली फ्रीलांसिंग मुझे इतना नहीं पता है. ये जो है हमारे लोग क्या लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड आता है ना वो रेमिटेंस आता है. जो हुंडी के थ्रू और वैसे किसी को जेब में डाल के यार उधर मेरे $30 बिलियन है. वो इसमें नहीं आता. मिडिल लेकिन अमाउंट होना का रेमिटेंस में आता है सर. फ्रीलांसिंग का रेमिटेंस में आता है. जब बैंक स्टेटमेंट आप इशू करें तो उसमें रेमिटेंस लिखा होता है. ठीक है. अगर डॉक्यूमेंटेड है तो आएगा डेफिनेटली. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कि some company comes with direct investment like Saiwal power plant for example. The government का पैसा नहीं है इसमें. The government has not invested. Maybe in a small way कि land उनको लेके दिए something छोटा सा. But वो उनके direct investments हैं. They come here, they invest, they get that money back. Good enough. तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा नुकसान ही पड़ता है चीज को. नहीं पावर प्लांट्स तो it is in foreign direct investment. उन्होंने investment की. They went to their own banks, they got their money, and they are selling us electricity at some certain rate, and that is in rupees, that is not in dollars. Maybe some ऐसे हो, I don't know, but generally foreign direct investments, these are good things. कोई खराबी नहीं. And if the economy starts moving, foreign direct investment आनी चाहिए. आपका burden government का खत्म हो, जो डेफिसिट्स वगैरह और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और ये आपका जरूरत नहीं पड़ती. वरना आप सोचेंगे कि पावर प्लांट में गवर्नमेंट पैसे लेगा. कहाँ है गवर्नमेंट के पास? रेलवेज को जो बना रहे हैं वो गवर्नमेंट लोन लेगी. आई विश दैट आवर डेटा आवर हिस्ट्री हैड बीन गुड इनफ वेयर द सम कंपनी इन द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर एग्जांपल चाइना, वो इसके डेटा को देख के वो कहता कि नहीं, there's a lot of money to be made there. They would have come with foreign direct investment. कंपनी आके पैसे कमा. There was a company here who wanted to invest in a high-speed train between Islamabad and Lahore. Government was not doing it, except of course facilitating in whatever, in purchase of land and this and that. Foreign investment ये कि बाहर से फर्क मामूली सा है कि वो आके आपके साथ मिल जाए, थोड़ा सा आप करें, कोई और करें. एक्सचेंज रेट जो हमने डॉलर का, ये एक इंडिकेटर होता है. इन्फ्लेशन, नाउ दिस इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट, ये आम आदमी को अफेक्ट. ये बाकी सारी इकोनॉमी की बातें हैं, इकोनॉमिस्ट की बातें हैं. वो इधर थोड़ा सा एडजस्ट करें, उधर ठीक करें, इधर ठीक करें. The common man is not affected. He is affected by inflation. When the roti goes high, when the ghee goes high, when the sugar goes high, then he starts yelling. And he should. Inflation जो होती है वो जैसे अभी 12.3% है, तो इसका मतलब है पिछले साल से ये 12.3% की रेजिस्टेंस है. हाँ, ये मंथली भी होता है. ये जो इन्फ्लेशन मंथली भी काउंट करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये हर वक्त देख रहे होते हैं. आई थिंक डे टू डे का भी है, क्या चीज कितनी है, तो वीकली का भी है. जैसे कोई रेफरेंस पॉइंट एक होगा वो कह रहे हैं. जब when you talk of the economy as a whole, then it is yearly. Yearly inflation ये था, yearly. जैसे इसका कोई
बेस ईयर जैसे मैंने सुना ये पता नहीं कंफर्म लेकिन कह रहे 2007 के हिसाब से काउंट करते हैं 2007 में क्या नहीं, ये I think it is related to last year. 2016 में हुआ, तब 2016 भी किया हुआ। I don't know, maybe Benchmark to 2016 base year हो, but normally they compare it to the last year कि ये जितना inflation जितना inflation. Unemployment again is an indicator of the economy. If it is not moving, it is not growing, industry is not there, manufacturing is not growing, your agriculture sector, service sector, banking sector, they're not growing, that means they're not absorbing people. लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, लोग निकल रहे हैं टेक्निकल कॉलेजेस से, लोग मजदूर बैठे हुए हैं, काम नहीं। A good indicator would be अगर आप, I'm sure you've gone to pretty many times ये tours पे भी गए, ये when you cross here short of Tarnoor, short of when you cross Texla, लेफ्ट साइड पे देखें इतनी हैवी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, क्रेन्स पड़े हुए हैं और ये आपके रोलर्स पड़े हुए हैं और स्क्रैपर्स पड़े हुए हैं और डंपर्स पड़े हुए हैं, बट ये क्रेन है। नाउ अब व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ देम स्टैंडिंग, दिस इज आल्सो एन इंडिकेटर, जनरल इंडिकेटर कि यार काम ठीक नहीं है। आपका उधर जब वो काम शुरू हो जाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो गए कि सडनली यू सी जगह खाली हो गई। मिसाल दे रहा हूँ, जनरली आप जा रहे हैं एक रोड के ऊपर, तो these are all indicators which you should be able to sort of analyze. एक वक्त में frankly वहाँ बिल्कुल कुछ चीज खड़ी नहीं होती, you had to search for these lifts और ये shovels और ये वो, तो लगे हुए थे प्रोजेक्ट्स में जगह, ये सीपैक के चूंकि प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब फिर वो खड़े हो गए, अल्लाह करे फिर चल पड़े। वैसे ही बताओ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ आपस में रिलेटेड है, तो इसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन कांस्टेंट जा रही है 6 पॉइंट समथिंग पे ही है हमेशा, तो इसका क्या रिलेशन है? हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी अच्छी खासी, देखो मैंने पहले भी कहा कि ये जो एक इंडिकेटर है ना, ये कनेक्टेड है। पॉपुलेशन ग्रोथ आपके पर कैपिटा इनकम के साथ भी कनेक्टेड है कि नहीं? इसको आप कम करें, आपके पर कैपिटा बढ़ जाए, ये दो तीन को साइड में जो बैठे हुए इनको खत्म करो, आपके मजे हो जाएंगे। तो अच्छा, ये जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये बेसिक फैक्टर है, ये मुल्क देखो, जो सिटीजन है ना, सिटीजन द कॉमन मैन, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज उसके लिए होगी, हवा में तो नहीं हो रही, इट इज फॉर देम। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ आई हैपन टू बी liaison officer to the minister who had 3 portfolios. One of them was population planning. तो 3 महीने का था वो caretaker minister. तो I was surprised, आप मानेंगे नहीं, the highest level secretary बैठा हुआ है, पता नहीं DG बैठा हुआ है population. तो वो United Nations की एक very important person है, forgotten her name, पाकिस्तान की इसी इलाके की, या पाकिस्तान की या इंडिया की, आई डोंट नो, बट शी इज अ मुस्लिम, साड़ी माड़ी पहनती थी और बड़ी अहम थी, वो आ रही थी विजिट पे। तो दिस मीटिंग हाईएस्ट लेवल वाज कॉल्ड, तो आई रिमेंबर वो कहते हैं सर आप बताएं कितना ग्रोथ रेट कितने पॉपुलेशन का। मिनिस्टर को कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या रखें, वो जगह यार जो है वो रखो। वो बड़ा अच्छा जबरदस्त आदमी था, अफजल खान वाला स्वाद का। उन्हें सब वाई यू आस्किंग मी, मैं कहता सर वो अगर ज्यादा रखेंगे फिर वो हमारा इंप्रेशन बड़ा खराब होगा, क्योंकि ऐसे भी काम होगा। लकीली ये चीजें अभी इंस्टीट्यूशनलाइज, आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक, जब डाटा इतना नहीं था तो हम करते थे, फंच करते थे 2.3 अच्छा या 2 लुक्स बेटर, 1.9 इज बेटर देन 2, ऐसे ऐसे हम करते थे। तो ग्रोथ रेट बहुत से मुल्कों ने कंट्रोल किया, चाइना ने कंट्रोल किया, बांग्लादेश ने कंट्रोल किया, इंडोनेशिया ने कंट्रोल किया। तो हमारे प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, कुछ रिलीजियस भी हमारे इश्यूज हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी आपने केवल मेरे ख्याल, although very exhaustive, poverty बात नहीं। Now again this is the common man. How do you get people out of the poverty line? China is doing some sort of immense work in this. They are moving millions of people every year out of poverty and getting them into the middle class. That's बड़ी बात।
चाइना में जो मिडिल क्लास है ना, I think if I'm not wrong, it is at least 700 million people. 700 million people in the middle class. India may be up, they're also catching up. Unka maybe 350 or 400 million in the middle class. You can well imagine कि जो purchasing power है, जो लोग चीजें खरीदेंगे, जिससे इंडस्ट्री चलेगी, जिसका बैक एंड पे lot of benefits, ये चीजें काउंट करती हैं पॉवर्टी में. अब पॉवर्टी you will be surprised अमेरिका में भी. You go there, you will be surprised. लोग ऐसे लेटे होते हैं, मतलब कहते हैं यार ये क्या है? I have seen people right in front of the White House. Homeless बैठा हुआ है ऊपर, उसने तरपाल लिया हुआ है और बस उसमें घुसा हुआ है होल. Actually it's an actual hole. और वो होते हैं ये जो अंडरग्राउंड का एग्जॉस्ट नहीं निकलता, उसकी गर्म हवा होती है. फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में वहाँ भी पॉवर्टी. साउथ में, साउथ ऑफ अमेरिका, ये जो स्टेट्स हैं नीचे, मिसिसिपी है, ओक्लाहोमा, ये है पॉवर्टी. ये एक लाइन ड्रॉ करनी होती. पॉवर्टी से ऊपर एकदम मिडिल क्लास नहीं होता. पॉवर्टी तो बहुत ही लो है. यहाँ पे अमीर भी कहता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, गरीब भी कहता हूँ मिडिल क्लास. ये अगर आप कंपेयर करोगे दुनिया के साथ, डॉलर के साथ करो, फिर पता चलेगा. और जो परचेज पावर पैरिटी है उससे पता चलता है कि हमारे लोग इतने बुरे नहीं है. है बहुत गुर्बत बहुत है. अब मैं देख रहा हूँ ये मांगने वाले ज्यादा हो, या तो रमजान की वजह से या प्रोफेशन बना दिया है. क्यों बनाया यार? अगर नॉर्मल, अगर कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा ये बढ़ गई. कोविड के दिनों से बहुत बढ़ गई. कोविड है, मैं देखता हूँ ज्यादा हो चौकों में लोग. सर हमारे यहाँ तो हुकूमत में बेकारियों की है. हाँ, सदर में हुकूमत बेकारियों की है. वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है. अच्छा, फिर सोशल इंडिकेटर ये बड़ा जरूरी है. लिटरेसी रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बाहर आपको देख रहे होते हैं लोग, वो असेस कर रहे होते हैं यार क्या चीज, ये मुल्क कैसे है. तो दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स कि ये इट जस्ट शोज यू हाउ द इकोनॉमी इज रनिंग. लास्ट वाले तीनों डेटा सही कलेक्ट नहीं होती बस ना. डेटा किसी चीज में भी नहीं होता. इनकम टैक्स का आपका डेटा नहीं है. अच्छे वाले लोग हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे, लाखों रुपए दिन के कमाते हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे. ये जो करप्शन है, इसके भी वो दे हैव मींस एंड मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग इट. मेरा अपना व्यू है इसमें. आई फील करप्शन इज एन आउटकम ऑफ इनकॉम्पिटेंस. आप प्रोफेशनली ठीक नहीं है ना, आपको अपना काम नहीं आता, तो फिर आप थोड़ा करप्शन की तरफ सोचते हैं. जो बंदा प्रोफेशनल आदमी होता है ना, अपना काम कर रहा होता है एंड ही नोज हिज जॉब, जो भी फील्ड है, बहुत कम उस पर करप्शन होता है. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, पर ये ठीक है. सर जो टैक्स ऑफिसर्स रहते हैं, हमने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया, करप्शन करप्शन, तुम भी करप्ट हो, ये भी करप्ट है, कुर्सी में बिठाया नहीं है. We have yet to put him in the chair, and from day one we start looking at him as a corrupt person. And this is a negative kind of a thinking, positive नहीं है. The thing is, as an officer, when you go and you start working in your own fields, the day you are put there, you should be professionally competent. You should be a man of integrity. You should be an honest person. Basic चीज है. लेकिन होता क्या है कि हमने this drama of corruption, we have drummed it up so well, और इतना कर दिया लास्ट पता नहीं कितने 10-15 years से लगे हो corruption, that every person you see you think he is corrupt. He is corrupt unless he proves otherwise. तो लगे रहो फिर तो 3 साल में अपना इंप्रेशन बना लो यार, नहीं यार ये अच्छा, फिर कुछ 10-12 साल के बाद नहीं यार वाकई अच्छा, फिर 20-25 साल गुजर जाते कहते यार सही है यार, पहले दिन से उस पर आप एतबार करें. हाँ, फिर तो कैरेक्टर एक्टर होता है. कैरेक्टर एक्टर फिल्म में ना एक हीरो होता है, वो ऐसे ही मजे कर रहा होता है. Then you have this villain, he is always near the hero. अगर वो हीरो के पास फरारी गाड़ी है तो इसके पास भी लैम्बोर्गिनी होगी, तो बराबर की. फिर एक कैरेक्टर एक्टर होता है, वो हीरो का दोस्त होता है.
वो अकेले में मर जाता है, फिर वो आर.डी. बर्मन का गाना चल रहा होता है, तो कहते हैं यार अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी। ठीक है, तो ये है। खैर, तो ये करप्शन, इसको आप ध्यान में रखें। ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो ड्रामे हैं इसको खत्म होना चाहिए। कॉम्पिटेंस को देखें। If a person is competent, and he'll give you all the reasons, all the time to prove that he's corrupt. The day you find out he's corrupt, then don't leave him. वो टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए। लेकिन पहले से ड्रम अप करना, अब सारी दुनिया करप्ट है। रियली मैं भी अपने आप को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हूँ, तो हर काम करूँगा मैं, पॉजिटिविटी दूंगी। फिर वो FIA और ये नैब है और फलाना पकड़ लो। अभी कल परसों की बात है कि there were people in the railways who were into the signaling project. You know, they were put behind bars for 6 months to 1 year. और कल परसों आया कि लीजिए बिल्कुल पार साफ है, कुछ नहीं। तो उनके 6 महीने और साल जो गुजारा है जेल में, कौन वापस करेगा? और वो जो उनका स्टिग्मा लग गया ऑफ करप्शन, दिस इज रियली बैड। तो ये फिर डिस्करेज करता है उसको। खैर व्हाटएवर, ये दीज आर इंडिकेटर्स। So now come रेलवे से किसका रिलेट करेंगे? करप्शन। ये इंडिकेटर्स ये तो मैं इकोनॉमी आपको रेलवे में तो मैं अभी आया नहीं, ये तो मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, आपके जहन इकोनॉमिक्स पे जाए। ये ओवरऑल मुल्क के आपको बताया, नथिंग टू डू विद रेलवे। इसमें जब आप इकोनॉमी को एनालाइज करोगे फिर रेलवे आएगी ना, आप भी पैसे मांगोगे कि नहीं लोकोमोटिव्स के लिए। तो वो जब आपको पता है कि मेरा GDP कितना है, आपको पता है कि मेरा ग्रोथ रेट क्या है, तो आप खुद ही बैठ जाओगे यार मैं किससे मांगू। अच्छा, फिर $8.2 बिलियन का जब ML1 आएगा तो आपका यार कितना फिट करें इसमें। आपका फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट अच्छी बात की खैर, ये जो है वी वर टॉकिंग हियर डेवलपमेंट बजट, ठीक है। योर डेवलपमेंट बजट आउटले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट आई थिंक इट इज अबाउट 6 to 700 billion rupees. 6 to 700 billion rupees for all projects, whether it is road, whether it is health, whether it is railways, whether it is agriculture, whether it is anything. Federal. So now you want to bring in a project like ML1. ML1, let us say it is $8 billion. $8 billion. So you have come up and you go to the planning ministry or to tell you have $8 billion project. If it is not properly done, you have not done your homework, professional competence नहीं है, मसले हैं, तो आपको दरवाजे से ही बात करेंगे, इसको कहीं और ले लें। 8 बिलियन मल्टीप्लाई करो कितना बन? हाँ, 1400 अरब रुपया। 1400 अरब रुपया। वो कहेगा यार मेरा पूरा डेवलपमेंट बजट साल का जो सारे महकमों के लिए वो तो 700 अरब है। आप किधर से आ गए? हर साल थोड़ी नहीं, फिर भी हर साल भी कितना वो कहाँ से देंगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस तरह है, ध्यान में रखो ना बिगर पिक्चर। So you should know the bigger picture. And since we are talking of transport economics, so you should know what economics is, what economies are. तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। अब रखिए ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या था? आसान लफ्जों में व्हाट वाज इकोनॉमिक्स? मैंने आपको कहा था ना, दो लफ्ज हैं, स्केर्स रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड डिजायर्स एंड वांट्स एंड नीड्स। इसका प्ले जो है ये इकोनॉमिक्स। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, ये इकोनॉमिक्स स्टडी है। अब आप जब आते हैं ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, चलो ट्रांसपोर्ट लग गया इसके साथ, तो लेट अस सी फिर ये ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या बनता है। किस सेक्टर में? इंडस्ट्रियल या सर्विस जी? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। ट्रांसपोर्ट तो आएगा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा, बट व्हेन यू लुक एट द प्रोडक्ट दैट इट इज गिविंग, इट इज अ सर्विस। लेकिन उसमें
since it is a huge complex thing, उसको हम देखेंगे infrastructure का जो खर्चा है, वो तो service में नहीं आएगा, you have to spend money on it, but the product is service provision. Transport economics is a branch of economics which deals with the allocation of resources within the transport sector, and this John Myers is a good economist. He is simplest with that. Okay. Allocation of resources within the transport sector. Limited resources. वहाँ पे भी लोगों की wants हैं. Let us see क्या के wants. What are the wants in transport? Then there is another definition which says transport economics could also be defined as the study of the movement of people and goods over time and space. How do people move? Why do they move from one point to another? Or time or space? Time, how much time are they willing to spend? पहले घोड़ों पे जाते थे, पहले कैमल्स पे जाते थे. कल we were just, हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, हेरिटेज का ग्रुप है. So you will be surprised that Pathans, Afghans went from this part of the world, वो गए ऑस्ट्रेलिया, वो गए डार्विन, एक्सपोर्ट है नॉर्थ में. डार्विन से these Pathans along with their camels, they used to travel 3,000-4,000 kilometers into the desert और नीचे जाके मेलबर्न और सिडनी और एडिलेड और इन शहरों में ना साउथ में डार्विन पोर्ट से बाय लैंड जाते थे. तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन. And they used to take these camel caravans. They're very interesting stories. They used to take these goods from the port onto these cities. तो जो है ना, movement of people and goods over time and space. इधर से चलते थे, पता नहीं I don't know how many months that they would reach on huge caravans. Lovely line of camels. Why camels? Because that air part of the world is all desert. In the center of Australia, there is a place known as Alice Springs. बड़ा अच्छा टाउन है, मैं बड़ी ख्वाहिश है जाऊँ, लेकिन गया नहीं. मेरे लिए एक दोस्त गया और मेरे लिए एक मेरा नेफ्यू भी गया. तो एलिस स्प्रिंग्स इज इन द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आपको कुछ पता है, कोई आइडिया है? दरमियान में क्या कहते हैं, सारा वो डिलीटेड है वेबसाइट. तो वहाँ पे अभी भी उनके साथ डिसेंडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे मैं बताता हूँ ना. इंटरेस्टिंग है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिंक्ड है ना. इसके सीख लिया मैंने यार. चलो, दिस इज मोर देन इनफ. So Australia is something like this. ठीक है, इधर से इधर, यहाँ पे सिडनी है, इस जगह पर्थ है, पर्थ. यहाँ पे मेलबर्न है और एडिलेड है, यहाँ ब्रिस्बेन, यहाँ पे ये इस इलाके में डार्विन है. यहाँ इंडोनेशिया बाय द वे. ठीक है, यहाँ से दिस कैमल ट्रेल पीपल वेंट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पता नहीं कहाँ के थे, दैट हैज टू बी फाउंड आउट. ये किस इलाके से गए थे, केपी के या अफगानिस्तान के, उस जमाने में एक ही था. इधर आए एंड कैमल ट्रेल्स यूज्ड टू गो हियर. यहाँ पे एलिस स्प्रिंग्स है, यहाँ से फिर इधर जाते थे और इधर आते थे एडिलेड वगैरह में. और ये था अबाउट 3,000 किलोमीटर. अभी गूगल करो, आपको पता है, मे बी 4 हो, बट आई एम सेइंग थाउजेंड्स. आपके नॉर्थ गिलगित से लेके कराची से ज्यादा है. अब क्या करें, शिप्स पे लेके गए ना, अंग्रेज था. They found out that these are the only people who can do it for us. यहाँ से
बाई शिप कराची लाए, कराची से फिर बाई शिप गए सिंगापुर, सिंगापुर से डार्विन, और वो अपने कैमल्स वगैरह पूरा हर चीज लेके गए। अच्छा, फिर यहाँ पे चूंकि पोर्ट था, यहाँ से अनलोड होती थी, यहाँ से आते थे एलिस स्प्रिंग्स और यहाँ से। अब इन लोगों ने, आई एम टॉकिंग ऑफ 1900 एंड समथिंग, 1910, 1913, 1914, 17, तो ये पठान वो कैमल ट्रेल चला चला के ये रास्ता इन्होंने बना लिया। इसके ऊपर आज भी when you go there, there are mosques, not big mosques, आप समझो सेंट सोफिया की तरह, ऐसे नहीं छोटे छोटे, ऐसे पता चलता है कि यार ये मॉस्क है। इस रास्ते का नाम होगा सर अभी यहाँ से डार्विन से एडिलेड एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ब्राउन है। आई एम कमिंग टू दैट। ये इधर से एलिस स्प्रिंग्स तक ये रेलवे लाइन ये मैंने देखी है। अब आके 4, 5, 6, 7 years ago, I've forgotten now, they have even connected Alice Springs to Darwin. So you, from here you can go even up to Darwin by train. अब वो जरूरी है, economics ऐसे थी, they wanted this train. वहाँ बोर्ड है, कहीं पड़ता है, so bring it down to this part of the road. Even today, one of the most valued tourist trains is known as the Ghan Express, Ghan, Ghan. And Ghan is short for Afghan. It was the Afghan Express. अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें और अफगान को देखें, ये ट्रांसपोर्टेशन का कमाल है बस। इस दुनिया के अफगान को देखो, उधर देखो। So they cut the AF out और वो आज घान एक्सप्रेस है, but actually उसका नाम है अफगान एक्सप्रेस। And these पठान्स, ये जो पश्तून थे, इधर काफी सेटल्ड है। Again, ये अभी आगे आएगा, where transportation is the only means where they people get together. अगर ये ना हो तो बेटर हो अपने अपने इलाकों। तो खैर, अब ये जो सेटल हुए हैं, the story is that 1910, 1911, 12, 14, 15, उस जमाने से आज तक वहाँ रह रहे। जो जनरेशन गैप्स आए, मॉडर्न पठान्स आर ऑल प्योर ऑस्ट्रेलियंस, शक्लों से भी और शादियां भी ऑस्ट्रेलियंस के साथ की हुई, वो बिल्कुल अंग्रेज माहौल। और जो पुराना उसका दादा है या पड़दादा है, वो फंसा हुआ है सुई पुराने पख्तूनबली में और गैरत में और इज्जत में, और जबरदस्त लड़ाइयाँ। तो मेरे ये जो दोस्त गया था, यूपीआई का अल्लाह बख्शे उसको, तो ही वेंट टू वन ऑफ द 2, 3, 4 फैमिलीज ने विजिट की। कहता है सारा वक्त यही लड़ाई होती है। कहता मैं दादा के साथ बैठ के ना बात करता था कि ये है वो, आप अपने इलाके में क्यों नहीं जाते, और ये आपको पठान है ये। कहते ये गैरत में नहीं छोड़ते बच्चों का और बेटों का। कहते इसको देखो, इसने ये किया और उसने वो किया। अब मॉडर्न और ओवर वैल्यूज का फर्क लड़ाई। फिर ये क्या हुआ कि what they did was those camels were a means of transportation, and they did a good job frankly for that time. Then what they did was that they let these camels go free. उन्होंने जंगल में भिजवा दिया, तो करना क्या, काम तो खत्म हो गया। Now in Australia camels are declared pest. Pest उसको कहते हैं कि जो फसलों को तबाह करे। पेस्ट में वहाँ हेयर्स हैं, ये खरगोश हैं, मिलियंस हैं, और डेंगोज एक कुत्ता टाइप चीज है, कैंगरूज भी हैं, और डेंगोज कुत्ता का तरफ, और ये कैमल्स एक मसला। अब ये इसको शूट करते हैं, मेरे ख्याल में पेस्ट देते हैं, कैमल्स मारने के पैसे पेस्ट जो डिक्लेयर हो ना, उसके आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो पेस्ट आता है ना, ये क्या कहते हैं, लोकस्ट टीडी, हमारा तो बड़े पैसे अमीर होता है। सर सिंध वाले तो मार के कढ़ाई बनाते हैं। I know, वो हलाल है भाई। हाँ उसके लिए You know it is halal? यस सर, लेकिन सर ठीक है, तो खाते हैं, चाइना में वैसे ही खाते हैं। तो खैर ये आपको स्टोरी बताई ट्रांसपोर्टेशन की। Now it is a best, and let me tell you कि कैमल रेसिंग एक ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है, कुछ सुना है रेस के लिए रेडी, और एक मिडिल ईस्ट में। वहाँ से मिडिल ईस्ट में जब रेस का टूर्नामेंट वगैरह हो, तो ऑस्ट्रेलिया से कैमल्स आते हैं, उस पर ये जनरली पठान। अब वो अपने आप को कहते हैं, नहीं कहते हैं, दैट्स so movement of people and goods over time and space. So I took you to 19th century, वो बात से बात निकली। Branch of economics that deals with the allocation of resources within the transport sector. Basic चीज है allocation of scarce resources. किधर आप करते हैं?
You want to put it in the air sector, you want to put it in the railway sector, you want to put it on roads, ऐसे आपने decide करो. अमेरिका में एक वक्त में the entire railway, the US continent was opened up by the railways. Huge dependency on railways. इन्होंने इसको ओपन अप किया पूरे सेंट्रल अमेरिका को और जाके ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया, इसी तरह कनाडा में. But then later on, economists decided कि नहीं roads बना, so the railways came down, उसकी importance खत्म हो गई, कम होगी बोलते. Transport economics is study of allocation of transportation resources in order to meet the needs of society. Almost the same things being said in different ways. ये आपकी मर्जी कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है? तो needs of the society in the transport sector ये इसको fulfill करें. Transportation activities form a portion of the nation's total. The transport sector is a substantive part of the economy of any country. एक ज़माने में it used to be 18, 19, 20% of the economy. बड़ा important. Plays a role in building and strengthening national or regional economies. Without transportation, ये जो connectivity है, your Karachi ports would be nothing without connecting it to the hinterland, and your markets would be nothing if they're not connected to the towns and to the agriculture produce अगर मैंने खुद I witnessed this about a few years back. I was going हमारे गांव है कोड़ा खटक का, I went to जहांगीरा, so I found out कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरबूजे पड़े. ये खरबूजे किधर से? ऐसे कि ये क्रॉस द रिवर रोड बन गया, ये ब्रिज बन गया, तो उसके बाद जो उस इलाके में खरबूजा होता था वो ज़्यादा खराब हो जाता है, ऐसा इधर मार्केट में आ जाता है. कनेक्टिविटी रोड की बन गई, फार्म टू मार्केट रोड बन गया, पुल बन गया, फार्मर्स ब्रॉट देयर गुड्स देयर. दिल्ली में वो ये वादियाँ, हाँ वो बहुत अच्छी रहती हैं, तो यहाँ पे नहीं है, वहीं पे खाने के वो जो बड़ी सख्त डिमांड. और अब that is demanded all over the world. ये खवातीन मुंह पे लगाती हैं, चेरीज हो गई, ये क्या कहते हैं, एप्रिकॉट का जो क्रीम है ना, बड़ी जबरदस्त डिमांड है. हिस्टोरिकली नहीं वो बेचते हैं बाहर, इधर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं, उसकी बहुत डिमांड आ गई, उसको बाहर निकाल रहे हैं. Historically, it has been thought of as an intersection of microeconomics and transportation engineering. जो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स है ना, वो ऑन द माइक्रो लेवल जैसे बड़ा काम है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है, और दूसरी साइड पे इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रेलवे बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना. तो इन दोनों का एमैलगम इज ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, और ये इस तरह का एक वो बनता है इसका मॉडल ट्रेडिशनल. ये एक सर्कल में आप देखें इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं, दूसरे सर्कल में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की बातें. इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स बन जाए. When you talk of pure railways, वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है. When you talk of economics, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स, तो रेलवे इकोनॉमिक्स आ जाए. ये सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है, और ये जस्ट टू गिव यू व्यू ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इसमें यूएस नहीं, कि कितना जरूरी है लिंकेजेस, रूट्स जो है रीजन्स के मिला रही हैं, चाइना को मिला रही है, मिडिल ईस्ट को मिला रही है, इंडिया पाकिस्तान मिल रहा है, सी रूट्स हैं, एयर रूट्स हैं, लैंड रूट्स हैं, एंड विदाउट दिस ये जो हम ग्लोबल विलेज की बातें करते हैं ये बनना हो. सो जस्ट टू लेट यू नो कि ये ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड द ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. I think with CPEC, I have already told you. Okay. Now in this, when you look at CPEC, it is this part of the sea. इसमें borders नहीं है, by the way. Regions ऐसा है, world है. From the transport point of view, India ये पाकिस्तान है. This red है ना, ये ML1 है. So connecting this to China, इधर China के साथ connect हो गया. China सारा इधर पड़ा हुआ. जैसे पहले मैंने कहा कि फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू,
we are connected to Western China. Microeconomics sense में transportation involves relations between firms and individual. Microeconomics. When you talk of transportation, the microeconomics overall तो आपने aggregates बात करते हैं. Microeconomics में आपने देखना है कि ये कौन मांग रहा है. ये चीज जो बन रही है इसने जाना कहाँ पे? Firms, individual consumer. इसको अपने हेड करना हो. रेलवे ने भी, रोड ने भी, इसको देखना हो. Demand and supply of transportation for both passenger and freight and transportation pricing are among its concerns. Demand, supply, pricing. Economics. In transport, it is transport economics. In transport, demand can be measured in number of journeys. अब जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पे जो मैंने कहा कि डिमांड, रेलवे में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है? Demand for what? For travel from one place to another at an appropriate time. सही टाइम पे भी है ना? ये आपकी डिमांड है कि जी मुझे ये चाहिए. Then सप्लाई क्या चीज है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट सर्विस. बिल्कुल. ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या चीज प्रोवाइड करेगी? वो तो तरीका हो गया. असल चीज क्या है? बेसिक पैसेंजर में सर्विस तो ठीक है. किस चीज से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्रेन में, जहाज में, रोड के ऊपर. सीट जो है ना ये बेसिक चीज है. बस में कितनी सीटें, ट्रेन में कितनी सीटें, गाड़ी में कितनी सीटें. एंड देन द थर्ड इशू इज ऑफ हाउ मच आर यू गोइंग टू चार्ज फॉर प्राइसिंग. So economics is the interplay between supply and demand and pricing. Supply ज़्यादा होगी आपकी प्राइसिंग ज़्यादा. एक चीज की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होगी. वो जो ब्लैक मार्केट में if you remember. तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट the demand can be measured in number of journeys made or in total distance traveled across all journeys. Example passenger kilometer for public transport or vehicle kilometers of travel. कितना ट्रेवल पर ये पैसेंजर कितना ट्रेवल कर रहा है? ये 100 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, 10 जाता है. रेलवे का जो हमारा मेजर है ना, एक है पैसेंजर किलोमीटर. याद रखना ये सारी उम्र. डोंट टॉक ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स. अच्छी बात है नंबर ऑफ पैसेंजर, लेकिन असल चीज है पैसेंजर किलोमीटर. हाउ फार are your passengers going? The more they go, or then ton kilometer. आपका जो 1 ton of cargo of any cargo, वो किधर जा रहा है? दूर जा रहा है, करीब जा रहा है. जितना दूर जाएगा उतना आपको फायदा होगा, और जितना ज्यादा जाएगा उतना फायदा. इकोनॉमी जब स्केल आ जाएगी, वो भी इकोनॉमिक मेजर हमने पहले देखा. Supply is considered to be a measure of capacity in seats. पैसेंजर में सीट है, ये बेसिक चीज है, बेसिक यूनिट है. और किस किस्म की सीट है, देन यू प्राइस इट अकॉर्डिंगली. अगर आपने उसको बड़ा लग्जरी किस्म का देना है, ठीक है, उसको प्राइस आप करें. सिंपल आपने लकड़ी के बनाना है, तो उसकी प्राइस. अब वो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ इट इज अ हाई स्पीड ट्रेन, यू चार्ज इट अकॉर्डिंगली. वही सीट होगी बट चार्जेस और. वजह क्या? उसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा आते हैं व्हेन यू ट्राई टू अपग्रेड योर सर्विस. तो वो आपको वापस लेने. द प्राइस ऑफ द गुड, तो ट्रेवल है वो एक गुड है, सर्विस ले लो, is measured using the generalized cost of travel which includes both money and time expenditures. आप उस बंदे ने टाइम भी लगाना है. बुलेट ट्रेन में 4.5 घंटे लगते हैं, नॉर्मल ट्रेन में वही 16 घंटे लगते हैं. इन्वॉल्वमेंट इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इशू है. कहीं कहीं तो इंटायर जैसे पाकिस्तान में रेलवे इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ओवर. अब आके ऑरेंज लाइन आई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट अगेन गवर्नमेंट. बहुत से मुल्कों में ओपन एक्सेस पॉलिसीज के तहत प्राइवेट सेक्टर आता है. इन सम इंस्टेंसेस प्राइवेट एंटरप्राइज इज यूज्ड एंड प्लेज अ डोमिनेंट रोल. बहुत सी जगहों पे अब ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है.
Government provides facilities, equipment, especially if the rationale of government involvement is that a strong transportation system. Now the government has to decide कि आपको चाहिए क्या? For transportation system, what is the kind of transportation that you require? Should it be railways? Should it be highways? ये इशू चल रहा होता है. ये फैसला कौन करता है? जब कहते हैं गवर्नमेंट, कौन करता है फैसला कि रेल को क्यों नहीं हम तरक्की दे रहे, रोड्स को मोटरवेज बन रही हैं, शिपिंग लाइंस पे हो सकता है खर्चा हो, वो भी नहीं हो रहा. तो ये फैसला कौन करता है? इकोनॉमिस्ट, कैबिनेट. ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे. जिसका पढ़ ला पा रही हो, हाँ, जिस डिपार्टमेंट का पढ़ ला पा रही हो. नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप में और ये है फैसला उनका, ये पॉलिसी मैटर है. पॉलिसी मैटर, आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट किसी और उसमें कि पॉलिसी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट. ये रिटन है, ये पब्लिक पॉलिसी का जो थ्योरी है उसका पार्ट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप फैसले करें. They have to decide whether we invest in railways. If they, of course, they want a good transport sector, then they have to decide whether they invest in the railways or they want to invest in the roads or they want to invest in pipelines or they want to invest in shipping or they want to invest in airs or whatever your priority. And at times, a good political leader will bring all the professions together and he will tell them कि आप मुझे बताओ ये कैसे करें, क्या करें. And then he listens to them. जब political leadership ऐसी हो जो कि नहीं पूछती, अपनी मर्जी करती है, सर होना तो ऐसा ही चाहिए कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स है उनसे सारे बोले, इनपुट ले और उसके मुताबिक करें. लेकिन यहाँ पॉलिटिकल गेम्स के लिए नहीं होता. Let me tell you, it is lack of knowledge, lack of experience, lack of know-how कि हम ये खराब कैसे. बहुत कम पॉलिटिकल लोगों में जो अपने मफाद के लिए काम करेंगे, इन द प्रोसेस करेंगे, लेकिन पहले वो पॉलिटिकल बीइंग है, वो लोगों को फायदा देना चाहते हैं. लेकिन चूंकि अकल की जो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कमी है, अब पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि यार how does he decide? He decides that how many people will this benefit. That is common sense. The more it benefits, the better it is for him. At what cost it will benefit him? That if he doesn't know, and that if he can't analyze, so I don't know why people voted for him. Unfortunately, होता है हमारे पास ऐसी स्लोगन्स के लोग आ जाते हैं. ये मसले हैं. But the prerogative, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है. It has to be done by the political leadership. And आप मानेंगे नहीं, इतनी frustration होती है टाइम्स. लेकिन then at times ये common sense prevails. वैसे यार ये बंदा तगड़ा है, इसको इससे पूछो. That is ये political leadership का सबसे बड़ा अहम जो missing link हमारे मुल्क में है ना, it is to recognize competence. ये एक dilemma है, वो recognize नहीं करता, गलती खा रहा है. बहुत कम लोग होंगे तो कहते हैं यार मुझे खुद पता नहीं, किसको पता है. ठीक है, एग्रीकल्चर अपनी फील्ड है, मुझे एग्रीकल्चर का कुछ फर्क नहीं पता और पता भी नहीं होना चाहिए. जनरल ठीक है, इतना पता होता है. और मेरा एक दोस्त था पुलिस में, आईजी था, बड़ा अच्छा दोस्त. तो एक जगह से मिट्टी उठा के कहते यार इसमें चिकनाहट बहुत है. मैंने कहा यार पुलिस में तो तिलक मिट्टी की चिकनाहट तो देख रहे हो. He was trying to impress me कि मैं बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर में भी बड़ा करता हूँ. ऐसे पीएम जो होते हैं स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, तो ये इस तरह ही होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के. ऐसे पीएम तो एक जनरल पोस्ट है. इट इज अ स्पेशल पीएसपीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. पीएसपीएम, ये ऐसे पीएम को ऐसे ही एडवाइजर लिए हुए. ये होना चाहिए बेसिकली पॉलिटिकल लोगों को. Political parties should have experts in all fields. Or if they don't have it, they should know who is the expert. There's nothing wrong in this. If you're talking PS, Principal Secretary to the Prime Minister, he is simply a government official who should understand the dynamics of the. कि जो सारी बातें बताई, उसको economics समझना है. He should know about politics. He should know about regional dynamics. He should be able to tell you कि यार ये international diplomacy क्या चीज़ है.
little. इसीलिए national management, when you get into leadership positions, inshallah 20 grade में आप जाएंगे. If you have to go into 21, you will have to go through the national management college. That is exactly what they tell you. They don't teach you economics, engineering or biomedical science or फलाना और फलाना. वो ये चीजें सिखाते हैं कि गवर्नमेंट में कैसे रह के काम. उसमें सब सारी चीजें आती हैं. उसमें सोशल कल्चरल डायनामिक्स, आपके इंटरनेशनल डायनामिक्स, आपकी रीजनल डायनामिक्स, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी पब्लिक फाइनेंस, आपका हर चीज आता है. और ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है. Now when you are being promoted from 18 to 19, you will have to go for a course. इसको NCLC कहते हैं. ये सारी चीजें आप सीखेंगे, जनरल चीजें. Nothing about your own profession, by the way. अब चलें. Government's involvement in transportation, both macro and micro. अब macro overall transport sector, how do we manage it? This scarce resources, demands बहुत ज़्यादा है. ML1 आई, मोटरवे बनाना है, लाना और छोटी रोड आपकी ठीक नहीं. वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये रोड, मैं इधर से आता हूँ टेक्सला से, from कभी. Why about it is a bloody nightmare. तो अगर when I'm traveling every day, my priority would be कि यार पहले इस रोड को ठीक करो. मोटरवे बाद में देखिए. वो प्रायोरिटी फिर गवर्नमेंट ने सेट करना है. माइक्रो मैक्रो हो गया. माइक्रो क्या है? Within the sector, how do you allocate resources to railways? How does the railways then facilitate the common man, the common people, the goods, freight को कैसे facilitate? वो पैसे किधर लगाएं? लोकोमोटिव्स में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लें, क्या करें? ये फिर उसका फैसला है. लेकिन एंड में वही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात है. यू शुड नो, और स्पेशली दिस कोर्स विल टेल यू कि ये ट्रेन है क्या चीज और इसकी क्या इकोनॉमिक्स है. तो अगर पता होगा तो देन एटलीस्ट यू नो कि नहीं यार ऐसे ठीक है. और वो ये कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. तो फिर हमारे साथ यही हुआ, जिसने लोकोमोटिव दे दिया हम कहते हैं यार ये अच्छा है. जापान आ गया तो चाइना आ गया तो अमेरिका आ गया तो फलाना आ गया. लोकोमोटिव सारे नए आ गए, पता चल रहा है कि ट्रैक बैठ रहा है, पुल बैठ गए, क्रैक हो गया, फलाना हो गया, वो हो गया. चलो यार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पैसे ले. फिर पता चलता है कि सिग्नलिंग खराब है सर, फिर बड़ी पुरानी सिग्नलिंग इसको कौन ठीक करेगी. ये सारी चलता रहता है. कभी इधर से आप खींचते हैं, कभी उधर से खींचते हैं. तो ये हमारा काम है भाई. ऐसे कोई वो नहीं है कि हमारा काम की and trying to find out कि क्या करना. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब मैं आ गया हूँ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. ट्रांसपोर्टेशन पे हम जाएंगे फिर रेलवे. तो ट्रांसपोर्ट एज अ पोर्शन जीएनपी, अमेरिका की मैं एग्जांपल इसलिए नहीं अवेलेबल. एक वक्त में अमेरिका में एज आई टोल्ड यू 17, 18, 20% ऑफ द टोटल जीएनपी जो उनका था वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आया. और उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स रेलवे की थी और रेलवे की प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई. गुड्स यूज्ड टू मूव बाय, तो 1/6 ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता था यूएस में, पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन. 11% जो जीएनपी का था वो पैसेंजर से होता था और जो बाकी है 6% वो फ्रेट से आता. 4/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर जो दो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में था, बोथ पर्सनल एंड फ्रेट इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन गोज बाय, वो 4/5 of this total investment used to go to roads. At one time, railroads were the most important. बहुत ज़्यादा, as I said, they opened up the entire US. It is only because of railways कि ये तरक्की कर गया, जिस तरह भी चाइना ने की. And China has gone into another phase of high-speed rail. पहले तो ओपन था, अपनी रेलवे सिस्टम्स थी. पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर का लैंडस्केप जो है वो ये है कि पाकिस्तानी ट्रेवल 400 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर्स पर ईयर. 400 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर्स. ये अब इंडिकेटर है. It is expected to rise to 1 trillion passenger kilometers by 2030. मतलब डबल से ज्यादा हो जाएगा. ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है पाकिस्तान contributes 22.3% to the service sector, the GDP of service sector. 6% of Pakistan's total employment is transport sector में.
और ये 6 नहीं है एक्चुअली, ये ज्यादा है। ये डायरेक्ट होंगे, ये वो है जो कि किताब में आए, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, ट्रक्स छोटे छोटे, ये टेक्सला जाए फुल ऑफ ट्रक्स। आप गो टू जंगीरा, इट इज फुल ऑफ ट्रक्स। गो टू एनी प्लेस, ट्रक ही ट्रक होते हैं, चिंचियां, रिक्शे, लोग आर पीपल आर एम्प्लॉयड, बट वो अनडॉक्यूमेंटेड आई वुड पर्सनली से कि 10-12 से ज्यादा हो। जिस तरह हमारे ये कहते हैं ना, रेलवे शेयर इज लेस देन 4%, आई कंटेस्ट दैट, वो मैं आई पर्सनली फील पैसेंजर में होगा, बट इन फ्रेट we must be carrying about 10 to 12% of the railable rate. छोटी छोटी से आपने उठानी नहीं है, हमारा उसके साथ क्या कंपटीशन। खैर, then inter-urban passenger and freight transportation in Pakistan primarily by road, 94% जैसे है ना पैसेंजर किलोमीटर्स रोड से जा रहे हैं, 98% of the freight is going by road, टन किलोमीटर्स। रेल का less than 4. But we 30, 40, 50 years ago, we had a big contribution to the transport sector. Looking at all this, then the government decided, we as a policy, we will enhance the railway's share in the transportation sector from less than 4 to more than 20%. अब ये एक पॉलिसी फैसला आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि यार इसको ऐसे करें। हाउ डू यू डू इट? व्हेन इन रियल टर्म्स, इसको जब आप लोग, व्हेन यू लुक एट इट इन पैसेंजर किलोमीटर टर्म्स, व्हेन यू लुक एट इट इन टन किलोमीटर टर्म्स, हाउ डू यू रीच 20% इन 2025? ये आया था 4-5 years बैक, ये पॉलिसी है। उसके लिए then to reach that target of 20% share of the transport sector in Pakistan, ML1 project was then envisaged, it was planned, it was designed, and let me tell you कि जो volumes of traffic हैं, जो forecasting, जो अब आगे हम देखेंगे कि forecasting कैसे, how do you know कि यार traffic है लेकिन आप बनाए रेल में ML1 को कर रहे हैं, पीछे ट्रैफिक ही पता चला जी कुछ भी नहीं है, ना पैसेंजर है ना ये। So how do you know that? Oh, for traffic forecasting. The traffic forecasting is so good. अगर ML1 बना होता, today I think had it gone on as a normal project, जो था, I personally feel today we would have finished phase 1. Phase 1 खत्म होता, we would have been into phase 2. और आज 2022 है, 2-3 साल के 2024, 2025 तक ये खत्म हो गया। And the volumes of traffic, both in passenger and freight, we would have achieved that 20% very easily, if not more. वजह that वो आगे पर देखेंगे कि we are carrying a very small quantity of freight and passenger, और हमारा शेयर बहुत होना चाहिए। For that, then the government needs to invest. तो ये जो overall picture है, इसमें आपने आपको फिट करना है। And then how do you sell your project to the government? How do you sell your project to the political leadership? आप अरे रेलवे में बड़े तगड़े लोग हैं अपनी फील्ड में, but when that interface comes with the government, somehow problem हो गया, you can't sell it to the government. So transportation का role in strengthening of the economy, transportation facilitates वही बातें जो हम repeat करते हैं, facilitates communication, trade and commerce. Without transportation, आपके goods move, they can't move from one place to another. Your people can't move, so business cannot take place. And the corridor that we have in Pakistan from Karachi to Peshawar, Karachi to Quetta, Zabardast corridor. A lot of trade and commerce going on, agriculture hai, manufacturing hai, industry hai, good, everything going good. We have our problems, but from transportation point of view, Zabardast facilitation also. Then improvement in infrastructure is necessary for nation's economic growth. Without the infrastructure, whether it is the rail infrastructure or the
road infrastructure or the sea infrastructure of the ports or the airports or the airlines, इसके बगैर मुश्किल. So money has to be spent in the infrastructure. Of course, money spent means money. You should have a project where there is a return on that investment. गलत नहीं होना चाहिए. The word infrastructure is used to describe all the facilities that an economy has in place, including its transportation network of roads, railroads. So from our point of view, transport economics point of view, infrastructure is the facility built to facilitate transportation. Rail mein, what is the infrastructure? Track, Signaling. stations, signaling, ports, ports, dry ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है. टनल्स आ जाती हैं, ब्रिजेस आ जाती हैं, एवरीथिंग वो कनेक्ट करने के लिए जितना पैसा आपको चाहिए. और राइट फ्रॉम द एम्बैंकमेंट, राइट फ्रॉम द ड्रेनेज, राइट फ्रॉम द बैलेंस ऑन टू द रेल, ऑन टू द, और फिर आगे जो चीजें आ रही हैं, चाहे ब्रिज आ रहे हैं, चाहे टनल्स आ रहे हैं, चाहे हर चीज, उसके ऊपर फिर फैसिलिटेशन के लिए, उस ट्रेन को मूव करने के लिए, to operate it economically, you need a good signaling system. You need maybe some good electrical systems. ET आना चाहिए to save on money in the future. आपके ऑपरेशंस जब ज़्यादा हो जाएं, then you need ET. तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है. स्टेशंस भी हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर. इनफैक्ट स्टेशन मास्टर जो है तो ऑपरेशन का हिस्सा, लेकिन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में. Transport's role in strengthening the economy, adequate infrastructure is prerequisite. ये तो हमने बात कर ली. Transportation communications are important in developing, strengthening social, political, and commercial ties. The railway network in Pakistan is a binding, iron binding force. Sorry, all the provinces are bound by this railway system. When you see a locomotive in a train in Quetta or Khattak, you see it in Chor, you see it in Peshawar, you see it in Faisalabad, ये सब एक ही. आपको पता है पाकिस्तान में, तो ये इंटीग्रेशन के लिए बड़ी जरूरी थी. जमाने में तो बड़ी अच्छी फोर्स थी. Goods to reach markets, of course, without the transportation, yes, much of dynamic growth in countries can be attributed to transportation. Transport allows each geographic area to produce a child. Now, some areas are good in producing one kind of thing, some are good in producing another kind of a thing. I think I gave you an example of Central Asia. Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan, these were good in producing cotton. Cotton producing areas up to late, अब वो diversify कर रही है. And the cotton was transported by trains on to Ukraine and to Russia. Factories, because of the communist system, factories वगैरह सारी यूक्रेन में. There is कोई factory नहीं. Why? That's a very difficult question to answer. The central leadership of the Communist Party thought कि नहीं, ऐसे करेंगे तो मुल्क इंटीग्रेट होगा. ये प्रोड्यूस करें, they are good at producing cotton, let them produce cotton. इसको फिर मॉनिटर करते थे through satellites. But then through trains it used to be transported to the textile mills in Ukraine and Russia. They thought maybe these people are better off so far as manufacturing is concerned, machine बनाना, factories में काम करना, वो लोग they thought कि ये better. So things then used to move, cotton used to move by trains to these places. वहाँ से अगर product बनता था, manufacture होके then come back to these areas. Again because of transportation. So this is when they're talking of one product and the other product. Or transportation links a number of different steps in production. It is only because of transportation that cars, for example, जो हम assemble करते हैं, your Honda car, your Toyota car, your Suzuki, everything, your trucks, ये knockdown conditions से आती हैं from different places. कोई जापान से आ रहे हैं, कोई चाइना से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, आके इधर हम assemble करते हैं. यहाँ हम assembling में अच्छे हैं, हमारी cost of production बेहतर है, हम यहाँ कर लेते हैं. वहाँ से it is only because of this transportation that it enables. This is a factory of extension of that factory.
So again, if that link is not there, this kind of business will not thrive. Similarly, sir, oil भी जैसे खरक में प्रोड्यूस होता है, खट्टक में उसको रिफाइन करते हैं. बिल्कुल. Transportation. Here it is transported, brought here. For that matter, oil in the Middle East, इधर आ रहा है, इधर आके रिफाइनरी में चल जाते हैं, डीजल में इस्तेमाल इधर हो रहा है, वहाँ पे रहा है. So ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है, whether it is by sea or by air or by land. Then it allows perishables to आपका your. I wish मैंने बड़ी frankly when I was DS Pindi way back 2000 and 2007 4 5 तक I tried my best कि यार एक किलो की ट्रेन from Balwal Malikwal Sargodha area 1 kilo train refrigerated should go into Iran. There's such a heavy demand. It's not Iran, chalo, take it to Karachi for export. And it is still there. So ये train की वजह से, good train operation की वजह से you can just take it. Because of refrigerated vans, आपके ट्रक उठा के ले जा रहे हैं. और कौन सा बड़ा मसला है? एक जनरेटर लगाए उसके पीछे और ये इनको कंटेनर टाइप चीजें बनाए उनको बिजली दें, refrigerated van में जाए. And let me tell you, refrigerated vans is not new to railways. 50s, 60s, fish used to come all the way from Karachi into KP and Upper Punjab, as fresh as yesterday. तो हमारे पास थी, खत्म होना भी बहुत कम है. और हैंग में वो बर्फ लगाते हैं साथ, टोकरियां लगाते हैं, एक्चुअली टोकरियां. And by the time it reaches, वो गर्मियों में स्मेल आ रही है. So perishables का सवाल आपके क्वेटा की सेब आ रहे हैं सारे पाकिस्तान में because of refrigeration, तो खराब होते हैं. फिर वर्कर्स के लिए फैक्ट्री से अपने घर जाना, घर से फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही आते हैं, otherwise it would not have been possible. So at one time worker trains used to run Pakistan में, Gujra Khan to Rawalpindi, Nowshera to Peshawar, Gujranwala to Lahore, भरी होती थी. Especially मोगलपुरा का जो वर्कशॉप है उसके लिए स्पेशल वर्कर ट्रेन चलती थी. Then of course producers, we have already talked of this, they can take their things to the market, resulting in economies of scale. Transportation network makes markets more competitive. If you can take your watermelons from, कल मैंने एक तस्वीर, by the way I saw a picture in the dawn. I counted at least 16-17 trucks of watermelon being unloaded यहाँ पे मंडी में. बड़े watermelon हैं. 16-17 trucks यार, एक ट्रक होता है, दो ट्रक होते हैं. ये फोटो में है, पता नहीं बाकी कितने होंगे. आजकल बहुत आ जाएंगे. तो रोजे के लिए अच्छा आइटम है. तो ये then this year transportation की वजह से और competition. Now if it doesn't sell in Pindi, that same truck just road driver बैठा, he takes it to where the demand is, he can take it to Peshawar. Transport networks also add to nation's defense capability. Without this, your defense capability would be nowhere. If they can't move forces, let me tell you on this item, India has connected Jammu to Kashmir to Srinagar by rail. It has connected Srinagar to Baramulla by rail, and Baramulla, Azad Kashmir में अगर आपका थोड़ा सा वो, it is right on the border. So with one connectivity of train, they can move a division of the army or defense forces in a day. Today they are here, tomorrow they are there fighting. हमारे साइड पे हम खच्चरों पे जाते हैं. ठीक है होगा, but this is how transportation comes. And this is how it makes you efficient. In the 65 war, in the 71 war, railways played a big role in your transport, in protecting the country. आप मानेंगे नहीं कि trains, military trains, defense trains, Quetta से all the way
in I think in not more than 28 hours, वहाँ से full load होके इधर पहुँची। और कहाँ गई हैं? शिवेंटा गई हैं आपके बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए। तो अगर ये ना होता तो क्या करता है? किस पे आता? So it is essentially required, especially railways. So बहुत ही essentially required as somehow thinking has changed over time. Again, whether it is good or bad, फैसला है उनका कि they are now more dependent on trucks. I personally feel this is not a good decision. Rail movement by rail of troops is very, very efficient and very fast. And mass. अभी सर रशिया का जो था वो जितने भी मूवमेंट थी मोस्टली वो ट्रेन के ऊपर थे, उनके टैंक्स वगैरह और सब कुछ। बिल्कुल ऐसे। Your heavy equipment जितना artillery है, your armored corps, your radar, they all travel by train. और ये by road जा ही नहीं सकते, लेकिन look at the roads then. Then I think we will do this later on. Yes. ये externalities बड़ी जरूरी हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ये भी एंड थिंग we discussed externalities in economics. रेल और ट्रांसपोर्ट में externalities बहुत बड़ा है, especially pollution and congestion. वो हम आगे देखेंगे। चलें, see you tomorrow then. Tomorrow maybe or Monday. चलें, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर। इधर वो किधर है इसका? ये तो नहीं है। यहाँ से निकाल इसका ये नहीं है। है?